हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं फिजिक्स 9 क्लास गेस्ट पेपर 2024। स्टूडेंट निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनाए गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और न्यूमेरिकल्स वगैरह दिए गए हैं इस गेस्ट पेपर में। स्टूडेंट आप इसको एंड तक देखें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, नीचे दिए गए रेड रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट इसमें से 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से आपने 5 करने होंगे, लिहाजा हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। हर क्वेश्चन को तकरीबन 3 से 5 लाइनों में लिखना होता है बोर्ड के रिक्वायर के मुताबिक। स्टूडेंट आप इसे लाजमी 2 से 5 लाइनों तक जरूर लिखें, क्योंकि आपको मुकम्मल 2 मार्क्स मिल सके हैं। अगर आप एक लाइन का जवाब लिखते हैं आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। व्हाट रोल SI unit have played in environmental development science? How many divisions are there on the Vanian scale? Convert 2 meter per second speed in kilometer per hour. How are vector quantity important to us in our daily life? Define uniform accelerations and give in any example. Define Newton's law, first law of motion. Define centripetal force. Define base and drive quantities. What is mean by the prefixes? Write an example also. Write 2 rules to find the significant digit in the measurement. Define distance and displacement. Define gravitational accelerations. Define least count of vernier calipers. Define motions and right type of motions. Define velocity. Define Newton third law of motions and give an example. Define centripetal force and centrifugal force. Write 2 advantage of frictions. Define physics. Define prefixes. Define drive units. Define linear motions. Define uniform speed. Define force. स्टूडेंट ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब हम चलते हैं। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो का एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आपको न्यू गेस्ट पेपर मुख्तलिफ 9th क्लास के दिए गए हैं। आप इसे इस वीडियो का एंड तक देखें। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन के जानिब चलते हैं। डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज मीन बाय द कपल। Define second conditions of equilibrium and writes its formula. What is mean by the movement of arm? What is orbit speed of a low orbit satellite? What is mean by the force of gravitations? Define unit of power watt. Define differentiate between chemical and mechanical energy. Define center of gravity. When a body is said to be equilibrium, think of a body which is at rest but not in equilibrium. What is mean by the force of gravitation? Why does the value of G vary from the place to place? On what factor the orbit speed of a satellite depends? Define power. What is center of mass? What is mean by the resultant of force? Define satellite and give an example. Define kinetic energy and its formula. Define formula and its formula. Define torque and its mathematical equations. Define center of mass of body. Define couple of force. What is mean by the global positioning system? Why communication satellite are stationary geostationary orbit? स्टूडेंट निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाट इज वर्क एंड एनर्जी, इनकी डेफिनेशंस को तैयार करनी है। स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। डिफाइन स्ट्रेस। व्हाट इज मीन बाय latent heat of fusion? What is difference between the heat and temperature?
Write any two applications of thermal expansion. What is convections? What is mean by subject to the conversion energy in houses? Define electricity. Define heat and temperature. What is thermal expansion? How does heat reach us from the sun? Write any two measurement of your suggest conversion energy in houses. Define convections. Define Pascal law. What is mean by the elasticity? Define evaporations. Write methods of heat transfer. Differentiate between land and sea breeze. Why metal are good conductor of heat? Define conductions. What does it represent when atmospheric pressure at place fails suddenly? Differentiate between stress and strain. Define conversion. What is greenhouse effect? 20 ये थे आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे. 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन. इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं. इसमें से स्टूडेंट आप इसे जरूर तैयार करें. प्रूव विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ. What is center of gravity of an irregular shaped thin lamina with the help of experiment? What is mean by the evaporations? On what factor the evaporations of liquid depends? Prove the first equation of motion with the help of the speed and times. Define rectangular component. How can a force be resolved into the rectangular component? Explain three scale of temperature. What is resolutions of force? Resolve a force F into the perpendicular component. What factor affect the rate of the evaporation given detail? Define equilibriums and explain its different state. Explain the near and thermal expansion in solid. स्टूडेंट ये थे आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस. आप इन्हें जरूर तैयार करें. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.